Hello everyone, my name is Shobhit Goyal and today we are going to talk about computer networking. Okay, before that some sessions we are covering some basic part of the computer system. Now we are going to start our class which is based on the first chapter of IP subject. Okay, for 12th class. So we are just starting a first chapter from that computer networking. Okay, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई टुडे क्लास. ओके, आज हमें बात करना है चैप्टर 1 नेटवर्किंग ऑफ आईपी सब्जेक्ट. ओके, so networking, there is an this is an term which we represent as a networking. So what do you mean by networking? Now networking, it mean it is a interconnecting, it maintain a connection between two or more devices that are known as networking. Is that we are just understood that definition of that networking. There is multiple definitions are written over there. Okay, so we are start one by one. So first definition is there: a network is a group of interconnected, okay, a network is a group of interconnected computer to share resource, exchange file और allow communication. Now it mean अगर हम बात करें networking की, तो networking क्या होता है? It is a group of interconnected, okay, it is a group of interconnected computer to share resource. Is it clear? Now whenever we talk about devices, it mean a computer device, it mean we can say handheld devices. The handheld devices are involving multiple smartphones, laptop, and not a laptop in a handheld devices. In a handheld devices that access smartphone and tablet also. Okay, so whenever we talk about that source, it mean that on the behalf of that source, all the devices are working as a source. And resource, whenever we talk about a resource, so resource are in the form of information which we distributed with the help of that source, and the medium of that medium which in the form of computer, laptop, smartphone, and tablet also. So all that with the help of that all devices we are able to distributing information from one place to another place. So there is a term is coming in front of us: resource and source. Resource, we can use that resource as a information, and the source we always use as a medium. It means devices. Okay, so a networking is a group of interconnecting computer to share resource, exchange file, or allow communication. It means with the help of networking we connecting multiple devices, two or more devices, to internally connecting to each other and sharing resources, multiple files. We exchange multiple files and stabilize the communication. So that are known as network. Now second definition is there. So second definition is saying: a computer network is a system in which two or more computer are connected using cable or wireless technology to sending and receiving data for the purpose of communication. Now we are talking about computer network is a system in which we connecting two or more computer to each other, and after connecting we are if we are connecting that computer device, so always we are using that cable. With the help of cable we are connecting that device, and after if we want to connecting that two devices, so we can connect wireless. We are using wireless technology, just like whenever we are not using wires, so we always use magnetic signal. Okay, so with the help of that magnetic signal we directly connected to two or more devices to each other. We have two different type of facilities for connecting the two devices. Okay, when we if we want to connecting two different devices to each other, so we can connect that two devices to each other with the help of wire and with the help of cable also. So whenever we have to connect that two devices to each other, so we have to required wired. Okay, so with the help of wire we can connect both devices to each other and stabilize the communication, and with the help of communication we can transfer multiple files and multiple messages to one device to another device. Now next, whenever we talk about connectivity without wire, so we can use a magnetic signal with the resource of with the help of this magnetic source we can connecting two different devices to each other. So with the help of these two source we can connecting two different devices to each other and transfer information from one place to another place. Now next is third definition is representing in a computer network we share our resource. Okay, हम जब बात करते हैं कंप्यूटर रिसोर्स की, तो हम यहाँ क्या शेयर करते हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर हम शेयर करते हैं हमारे रिसोर्स को.
रिसोर्स एंड दीज रिसोर्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो रिसोर्स होते हैं वो दो फॉर्मेट में होते हैं, एक तो हो सकता है आपके पास हार्डवेयर में और एक हो सकता है क्या, सॉफ्टवेयर में। अब हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दो फॉर्मेट में होती है, एक होता है हार्डवेयर शेयरिंग और एक होता है आपके पास का सॉफ्टवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में हम क्या क्या शेयर करते हैं, वेन एवर वी शेयर अ डिवाइस एज प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम एंड हार्ड ड्राइव। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं कौन कौन सी डिवाइस हम शेयर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर। प्रिंटर हम शेयर कर सकते हैं, स्कैनर हम शेयर कर सकते हैं, CD रोम हम शेयर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इट मीन यहाँ पे ये जो शेयरिंग कहला रही है, अगर हम ये चीज़ें शेयर करते हैं तो ये सब किस में आती है, हार्डवेयर शेयरिंग में आती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर शेयरिंग में, तो सॉफ्टवेयर शेयरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, शेयर ऑफ फाइल्स, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई फाइल शेयर करते हैं, जब भी हम कोई एप्लीकेशन शेयर करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं, तो ये सब कौन सी शेयरिंग में आती है, ये आती है हमारे पास सॉफ्टवेयर शेयरिंग में। ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट and if you want to take a screenshot so you can take it. Now next we are just going to talk about that image. This is an image which is representing the connectivity and which is representing a networking, and how it is representing a networking, just I am showing you. Okay, now you can see there is an server. This earth is representing as a server. There is a multiple clients are there, in which we can say there is a multiple users are there, so that users are directly connecting with the server. Okay, I am just giving a number of that particular users. Now there is a 4 users are there, 4 computer and 5 users are there, not a 4. So that all the 5 users are connecting with our server, and this earth is representing as a server. तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब भी हम मल्टीपल यूज़र्स को सर्वर से कनेक्ट करते हैं या फिर मल्टीपल डिवाइसेस को सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये मल्टीपल वायर्स हैं, यहाँ पे हमने वायर केबलिंग कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे हमने वायर से इन सभी डिवाइसेस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे जो अर्थ है वो सर्वर रिप्रेजेंट कर रही है और जहाँ पर जो डिवाइसेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ यूज़र। अब हमने यहाँ पे दो कैटेगरी बना रखी, एक हमारे पास होता है क्या, सर्वर, जो अर्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ सर्वर, और यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूज़र्स को हम यहाँ बोल सकते हैं क्लाइंट। ओके, इफ़ यू वांट टू से क्लाइंट सो यू कैन से दैट क्लाइंट। यहाँ पर जितने भी यूज़र्स होते हैं सभी को हम क्लाइंट के फॉर्मेट में रखते हैं। क्लाइंट एक ऐसा यूज़र होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट होता है जो डायरेक्टली यूज़र से कनेक्ट होता है, और क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम सिंपली बात करें तो सिंपली में बात करने में क्या होता है, जब भी आप कोई गूगल सर्वर पर जाते हैं या फिर गूगल को सर्व करते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग ऑन विद द हेल्प ऑफ दैट गूगल ब्राउज़र, so with the help of that Google engine, okay, so you put that all the information in that text box. If you want to search anything, so you have to type all that word inside the text box, or after that searching that word inside that, it will give you all information about that particular topic which you have to search in the search engine of the text box. Okay, और आप जो भी इन्फॉर्मेशन, आप जो भी वर्ड्स उसमें टाइप करते हैं उसके टेक्स्ट बॉक्स में, तो वो सभी चीज़ आपको सर्च करके आपके सामने ला के रख देता है। अब वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई क्लाइंट होता है, क्लाइंट इट मीन यूज़र होता है जो उस डिवाइस को यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ या आप है कोई डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं फ्रॉम द इंटरनेट ब्राउज़र की मदद से, तो ब्राउज़र के जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या करेंगे, कोई भी वर्ड पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं, तो ये जो सर्चिंग होता है, आपका जो क्लिक इवेंट होता है, सर्च क्लिक इवेंट, सो ये एक टाइप की रिक्वेस्ट क्रिएट करता है और यही रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी जाती है। जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो सर्वर यहाँ पे क्या करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वो अपने सर्वर में जाके, अपने स्टोरेज में जाके चेक करता है कि इस वर्ड से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रखी है। ठीक है, जो भी वर्ड क्लाइंट के थ्रू या फिर यूज़र के थ्रू सर्च किया गया है सर्च इंजन पे, तो वो अपने स्टोरेज में जाके देखता है और कितनी इन्फॉर्मेशन उसको, जितनी भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता है। जितनी वेबसाइट होती है, जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी इमेजेस होती है, जितनी वीडियोज़ होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख देता है। बस आपको चूज़ करना होता है कि आप उसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में होने वाली सिचुएशंस, हाउ दैट क्लाइंट्स आर वर्किंग, हाउ दैट क्लाइंट्स ऑलवेज प्रोवाइड रिक्वेस्ट टू द सर्वर, and on the basis of that request that server will
डिस्ट्रीब्यूट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ओके, अब यहाँ पे आपने जो रिक्वेस्ट सेंड करी उसके हिसाब से उसने जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने सर्वर पर रखी है या फिर उसके पास स्टोर है, वो सभी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, डायरेक्टली क्लाइंट को, उसके पेज पर, उसके होम पेज पर या फिर उसके ब्राउज़र पेज पर डायरेक्टली ले जाके क्या कर देगा, रिडायरेक्ट करेगा और उसको पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। जिस भी वेबसाइट को यूज़र्स क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस वेबसाइट को ओपन कर देगा उसके ब्राउज़र पेज पर। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी यूज़र्स कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसी भी सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सभी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट मीन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्लाइंट होता है, जो यूज़र होता है, ये हमेशा क्या करता है, यहाँ से रिक्वेस्ट करता है, और जो सर्वर होता है वो हमेशा इन्फॉर्मेशन क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट मीन हम क्लाइंट को बोल सकते हैं क्लाइंट ऑलवेज परफॉर्मिंग इट्स रिक्वेस्टिंग and it always requesting to the it doing always request to the server and that server always distribute the information according to the request। जो भी रिक्वेस्ट किसी भी यूज़र से आई है तो उस रिक्वेस्ट को सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड में यहाँ पे उसका डेटा कलेक्ट करके सभी को ट्रांसफ़र करता है किसी भी क्लाइंट को। तो यहाँ पे जितने भी यूज़र्स होते हैं वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करने का काम करते हैं और अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट यहाँ पे जो हमारा सर्वर होता है ये इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इट मीन client always be requesting to the server and server always be distributing to the information। Okay, now next there is a needs of networking. There is a 4 types of needs of networking we have to divide. There is a 4 different type of needs of networking, so we will discuss one by one. First is resource sharing. Okay, first is resource sharing, second is reliability, third is cost factor, and fourth is communication medium. So now first we are just going to discuss about this resource sharing. Now first we are just see that this is a resource and sharing. Share, it means share anything. If we are sharing anything, any files, any photos, so we can share on the public. It means we can distribute. That mean that simply we can define sharing as a distributing. Okay, resource and source, there is a 2 different word are coming from this single term, resource and source. Source in which we can define as a medium. Medium, it mean medium just like a device and just like many more things are there. So source we can show as a medium, and when we talk about a resource, so resource it means which the information which is distributing by the medium, that information are known as resource. Okay, whenever I talk about that a particular place, just like when I want to go at another place, अब मुझे कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मुझे जाने के लिए सोर्स क्या क्या मिल सकते हैं, मुझे जाने के लिए सोर्स बाइक मिल सकती है, ट्रेन मिल सकती है, बस मिल सकती है, एरोप्लेन मिल सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सोर्स, जिन सोर्स के थ्रू हम एक प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, सोर्स। इट मीन मीडियम। ओके, मेन मीडियम। अगर हम उस सोर्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सोर्स तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देगा। वो ऑब्जेक्ट जो मीडियम होगा जिसके थ्रू हम जाएंगे तो वो तो एक मीडियम हो जाएगा जो हमें यहाँ से दूसरी जगह पे भेजेगा, जैसे ट्रेन, बस, मैनी मोर थिंग्स आर देयर। सो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। बट उस सोर्स के थ्रू वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे। जितने भी मीडियम है वो सब हमारे लिए हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे। नाउ जब भी हमें किसी भी ट्रेन, बस के थ्रू हमें छोड़ा जाएगा तो हम उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, रिसोर्स, क्योंकि वो जो सोर्स है वो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, वो एक मीडियम है, वो एक सोर्स है। उस सोर्स के द्वारा हम जैसे रिसोर्स को, या फिर हम नहीं जा रहे हैं, यहाँ से हम कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कोई पैकेट्स है, या फिर हमारे कुछ सामान है, तो उसको हम किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेज रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किए जाने वाले ट्रक को हम बोल सकते हैं मीडियम, और उसके अंदर जो सामान को भेजा जा रहा है उसे हम कह सकते हैं क्या, रिसोर्स। तो सेम एज यहाँ पे हम जब सोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर डिवाइस हो जाएगी एज ए सोर्स, और जब भी हम रिसोर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र की गई सभी इन्फॉर्मेशन को हम रिसोर्स के फॉर्मेट में लेते हैं। नाउ अभी हमें बात करना है रिसोर्स शेयरिंग की। ओके, so in a network computer lab when printer command is given one computer, the document may be printed by the printer which is attached to the to some other computers. Okay, now there is some connectivity we have to maintain. We are connecting a single printer with a multiple devices. I am showing you. This is an hardware device, this is an printer is there, and this printer we connected with multiple devices. This is one device, this is second device, and this is third device. There is a multiple devices are there which we are connecting that single printer with a multiple devices. First is computer, second is laptop, and third is mobile. So we are just distributing a signal, we are transfer information, we are giving a command. This particular
printer, and this printer is performing its work and printing its data in the form of that printing on a paper. Okay, so whenever we are transferring information, so it will perform its work well. So that definition, these two lines are describing that we are connecting that a single printer with a multiple devices, and that all the devices are giving the instruction to the printer, and this printer is able to print a document from multiple users on the network. Okay, and that printer is able to printing that all the papers which is coming from that device 1 2 3 and many more devices if that are connected. ओके सो यहाँ पे अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा भी डिवाइसेस अगर कनेक्ट होती है, तो ये जितनी भी डिवाइसेस अगर इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो ये प्रिंटर यहाँ पे क्या करता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है, अपने पेपर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के देगा। भले कितनी भी डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो, लेकिन यहाँ पे ये रहेगा एट अ सिंगल टाइम पर एक ही डिवाइस की इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट की जाएगी, एक ही डिवाइस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाएगी, और वही जैसे भी वर्क परफॉर्म किया जाएगा उसके बाद सेकंड जो रिक्वेस्ट आई है उसका वर्क को यहाँ पे क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। मतलब एट अ सिंगल टाइम इट परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क, इफ बिकॉज दिस इज अ सिंगल डिवाइस, सो दैट्स वाई दिस सिंगल डिवाइस विल हैंडल ओनली सिंगल इन्फॉर्मेशन एट अ सिंगल टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होगी, जितने भी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, सबकी रिक्वेस्ट कलेक्ट करके ये अपनी प्रिंटिंग प्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे प्रिंट आउट निकालेगा। Now next is, it means that the printer is being shared by more than one users, and this single printer is shared by the more than one user. There is a 3 users are there which is sharing that single printer. This is an example of resource sharing, and this is possible only when the computer are interconnected to form a network. If that all the devices are connecting with the internet, so this is possible to connecting that a single printer with a multiple devices. Now next is similarly other resources like hard disk, DVD drive and scanner etc are there. These are multiple devices are there, so we can share that all the devices with the help of internet. Now next is can also be share one on a computer network, software resource like application software, antivirus tools etc can also be shared on a computer network. You can very easily including that this resources sharing also leads to cost saving. Now if we are purchasing a multiple printers and connecting with a multiple devices, so it is a very costly, because we are just connecting that single hardware device in a single device. So if we have at a time when we are talking about, if we are sharing that a single device, so it is performing a multiple task. This device is able to performing multiple tasks. But when we are purchasing multiple printer and we are attaching a single printer with a single device, just like I am purchasing a one printer and which is connecting with a one device, again I have to purchase a 2 more printer for connecting the second and third device. So it is very costly, because such like if we are purchasing that multiple printer, so we have to require a 3 printers, so that 3 printer cost will be very high. So in a very low cost we can perform our task, we can perform with perform our task with this single device. Is that clear? So with the help of this resource sharing, with the help of this sharing, we can perform our task in a low cost, and this is a very cost saving process in which we can share a single device with a multiple device, and after sharing we can perform our task very well, and we can save our cost. Okay, it is not a costly, it is a very cheap in payment, and we can do our work very well after sharing that hardware device in a low cost. Now next we are just talking about reliability. Now second point is reliability. When we are talking about that reliability, so reliability is a term in which we always it is a term in which we are observing any device and we are performing a task. With the help of the task we are observe that particular device. It means reliability is a form of test. With the help of the test we observe the device, this device is perfect or not. Okay, so whenever we are observing the features of devices, just like we are purchasing a camera, so we are taking a multiple pictures and watch all the details of that picture, how many pixels are there, there is many more features are there. If we are testing that features, if we are comparing that features, and that type of test, what test we are performing for
observing that particular device. So that tests are known as reliability. If that tests are successfully done, so we can say it is a high reliability. If that test will fail, so it having a low reliability. It mean ये एक टाइप का क्या होता है, अगर हम देखें तो रिलायबिलिटी एक टाइप का टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस के जो परफॉर्मेंस होती है, जो फीचर्स जो कंपनी के थ्रू दिए हैं, उन फीचर्स को ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, so it is an characteristics of set, we can talk about the definition. It is an characteristic of set of the test scoring that relates to the amount of random errors from the measurement process that might be embedded in the scores. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, रिलायबिलिटी एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेट ऑफ टेस्ट करते हैं. सेट ऑफ टेस्ट के थ्रू जो भी स्कोर परफॉर्मेंस होता है, उस स्कोर के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे जो डिवाइस है वो कितना यहाँ पर स्कोर कर रही है, या फिर कितना यहाँ पर जो बोला गया है उसके ऊपर कितना खरा उतर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कितना परफेक्ट डिवाइस है. ओके, जो दावा किया गया है उस डिवाइस के बारे में वो परफेक्ट है या नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट इज द स्कोर्स दैट द हाईली रिलायबल are accurate. Okay, and whenever we are just taking a test, so if that the test will be successful and यहाँ पे किसी भी डिवाइस का अच्छा स्कोर आता है, so it mean it is a accurate and reproduct we can measure that accuracy with the help of the test. okay, यहाँ पे अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसके हाई एक्यूरेसी होती है. एक्यूरेसी भी हम यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिविटी भी हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, कंसिस्टिंग फ्रॉम वन टेस्ट एंड occasions to another. Okay, so with the help of that multiple test we can measure that device, how many type of accuracy are there, reproductivity is how it's reproductivity, so we can measure all of these things. Okay, so now there is in types of reliability are there. First we are talking about that inter-rater reliability. Now inter-rater reliability, it means it is in reliability access the degree of agreement between two or more raters in their appraisals. For example, now there is an example is there. So first of all I am just talking about that inter-rater reliability. Inter-rater reliability, it means if we are purchasing any device and we are measuring any device and we are just taking a test of that particular device. So if we are purchasing a device, so that device having a same process for measuring. okay, हम कोई भी डिवाइस को अगर हम परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जिस डिवाइस का भी हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर हम अलग अलग व्यक्ति के पास लेकर जाएंगे तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट ही परफॉर्म करेंगे. तो वही एक पर्टिकुलर टेस्ट ही अगर हम एक प्रॉब्लम या एक डिवाइस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाता है क्या, इंटर-रेटर टेस्टिंग एंड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. इट मीन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम के लिए जो हम टेस्टिंग करेंगे, जो हम टास्क परफॉर्म करेंगे, जो टेस्ट करेंगे, वो भी क्या होगा, हमेशा सेम होगा. अगर हम पर्सन्स को चेंज करेंगे, अलग अलग पर्सन्स के पास जा रहे हैं और उसकी टेस्टिंग करा रहे हैं, तो जितने भी पर्सन होंगे सभी उस प्रॉब्लम के लिए एक ही टेस्ट को अप्लाई करेंगे. तो वो कहलाता है हमारे पास क्या, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी. नाउ देयर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट इंटर-रेटिंग रिलायबिलिटी. अ पर्सन गेट अ स्टमक एच. यहाँ पे एक पर्सन है जिसका पेट दर्द हो रहा है, जो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहा है, और डॉक्टर के पास जाने के बाद ऑल गिव्स द सेम डायग्नोसिस. ओके, और सभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, उसे एक ही ट्रीटमेंट बता रहे हैं, एक ही तरीका बता रहे हैं, एक ही तरीके से वो चेक करके उसको बता रहे हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या यहाँ पे डायग्नोसिस कराना है, क्या टेस्ट कराना है. सभी डॉक्टर जितने भी है सभी उसको क्या बता रहे हैं, एक ही डायग्नोसिस बता रहे हैं, एक ही टेस्ट बता रहे हैं. तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि जब भी हम इंटर-रेटर रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मतलब अगर हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है तो उस एक प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट होंगे वो भी टेस्ट क्या होगा, एक ही टेस्ट होगा. इससे क्लियर, भले आप कितने भी पर्सन्स को चेंज कर दो, सभी पर्सन्स आपको क्या करेंगे, एक ही टेस्ट सजेस्ट करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट सो यू कैन टेक इट. Now next is second reliability is test retest reliability. Now access the degree to which test scores are consider. Okay, I am just showing you consistency from one test administrations to the next. Okay, now access degree to which test score are consisting from one test administration to next. Measurement are gathered from a single rater who use the same methods or instrument and the same testing conditions. This includes intra-rater reliability. Now the definition is saying that when we are testing a single device after some time, just like
after 1 month, and after 1 month we are just testing that particular device, what is the performance of that particular device. So that type of testing are known as test, retest, reliability. It mean अगर हम यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस खरीदते हैं और उस डिवाइस का क्या करते हैं, हर एक महीने के बाद सर्विसिंग कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, तो वो कहलाता है क्या, टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। इज दैट क्लियर? जैसे हम अगर ह्यूमन बींग की बात करते हैं, कोई अगर कोई घर का कोई व्यक्ति है जो हर महीने अपना टेस्ट कराता है, अपना ब्लड टेस्ट कराता है या फिर हीमोग्लोबिन चेक कराता है, तो यहाँ पे हर महीने क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर एक सेम ही टेस्ट होता है, बट उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। तो उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है कितना है, इस मंथ में कितना है, अगले मंथ में कितना है। उसके बाद कोई भी अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, कोई अच्छा ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं और उसे वो ट्रीटमेंट करने का बोलते हैं, जिससे जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो कमी आती है या फिर कोई अलग दूसरी कोई चीज़ों में कमी आती है, तो उसे हम क्या कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। इट मीन टाइम बाय टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस डिवाइस को मेज़र करते हैं, उसका स्कोर मेज़र करते हैं और उसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये परफॉर्मेंस क्या दे रहा है। इज़ दैट क्लियर? नाउ जैसे हम इसको इस टाइप से भी ले सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट का बार बार टेस्ट लेते हैं, हर मंथ टेस्ट लेते हैं, हर 6 मंथ या फिर हम बोल सकते हैं 3 महीने में एग्ज़ाम्स होती है। तो ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे क्या होता है, कोई भी टेस्ट अगर लिया जाता है, बच्चे का स्कोर चेक किया जाता है या फिर किसी डिवाइस को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं बट टाइम बाय टाइम एंड आफ्टर सम टाइम, सो दैट टेस्ट आर नोन एज दैट टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। इज दैट क्लियर? Now next is inter method. Inter method reliability access the degree to which the test score are consistent when there is a variations in the method or instruments used. Okay. Now when we are talking about that inter method reliability is a reliability in which we are taking a different test for same problem. अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोई एक प्रॉब्लम है या फिर कोई एक डिवाइस है या फिर कोई किसी भी टाइप की डिसीज़ किसी एक पर्सन को है और हम अलग अलग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हर बार जो डॉक्टर होंगे वो अपना एक अलग ही ट्रीटमेंट करेंगे, अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, अलग टाइप के बहुत सारे जांचें लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये आती है इंटर मैथड। इंटर मैथड में क्या होता है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम के यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं, एक प्रॉब्लम क्या होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे और डिफरेंट स्कोर को मेजर करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। दिस अलाउज inter-rater reliability to be ruled out when dealing with forms, and it may be term parallel form reliability. Okay, now there is an term which is using for that. It is an inter-rater reliability which ruled out. Okay, when dealing with the form, it may be termed parallel forms reliability. Now parallelly we are just performing a multiple treatments for identify that single problem. So यहाँ पे क्या होता है, इंटर मैथड क्या होता है, इंटर मैथड रिलायबिलिटी। इट मीन कोई भी एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए हम जब मल्टीपल टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है इंटर मैथड रिलायबिलिटी। इज दैट क्लियर? आई एम जस्ट गिविंग यू अगेन शॉर्ट रिविजन अबाउट दैट रिलायबिलिटी। नाउ रिलायबिलिटी, इट इज़ अ form of test. It is a collection of multiple tests, and with the help of that test we can measure score of that particular device and particular person. Now it is divided into 3 types. First is type of reliability. First just a minute, it is divided into multiple types. First is it's inter-rater reliability. Inter-rater reliability, it have a single problem if it is observing with a different doctors with a different persons, so each and every person will give a same diagnosis for that problem. Now next is the test retest reliability. Now test retest reliability, it mean it is an test in which we are just performing same task after some time and some duration of time. ओके जैसे कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले दिन ट्रीटमेंट करता है, कुछ गोलियां लिखता है, उसके बाद 2 दिन बाद बुलाता है, 2 दिन बाद चेक करता है, उसके बाद फिर 2 दिन बाद बुलाता है। तो सेम एज ये वही प्रोसेस होती है जिसको हम बोल सकते हैं टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। सो बार बार चेक करता है किसी भी पर्सन को, जब उससे कंफर्म होता है कि नहीं 3 से 4 बार मैंने टेस्ट कर लिया, यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद फिर वो बोलता है कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 months you can again come here and do that test, and after that we can confirm that your problem is all totally solved. Now next is inter method reliability, access the degree to. Okay, now we have to just talk about that inter method in which we are just we are having a problem, and each if we are having a problem, so उस problem के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टाइप के टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हर अलग अलग व्यक्ति हमें अलग अलग सजेशन दे रहा है और अलग अलग चीज़ों से हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहलाता है इंटर मैथड रिलायबिलिटी। मतलब
एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मल्टीपल स्कोर से हम इसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे अगर मल्टीपल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं हम एक ही प्रॉब्लम के लिए, तो वो कहलाता है हमारे पास क्या, इंटर मेथड रिलायबिलिटी। इज इट क्लियर? दिस इज एन टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी विच वी हैव टू कंप्लीट, एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट गोइंग ऑन अ कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर इट मीन जस्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कॉस्ट फैक्टर, अगर हम कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो cost and factor it mean we can say it is a term, and cost it mean price. Whenever we are distributing money, when we are just giving a money in respect to, if we are purchasing anything, so on that particular thing, on the respect of that thing we are giving money, so that we can say it is a cost factor. Factor it mean we have to divide it some things in the form of in the form of prices. Okay, just like we are distributing our content in a free of cost, so we can say it is a free of cost, it a free cost factor. Okay, there is no cost factor is involving for distributing our content. If you are access our content, so there is no चार्ज फॉर एक्सेसिंग आवर कंटेंट। ओके, हमारे कोई भी कंटेंट को, हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, हमारे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, हमारी वीडियो को एक्सेस करने के लिए कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने कोई भी कॉस्ट फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है, जिसके कारण क्या होगा, अगर हमने कॉस्ट फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया तो जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो डायरेक्टली आके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कॉस्ट फैक्टर की, तो कॉस्ट फैक्टर कहाँ लगाए जाते हैं, अगर हम यहाँ पे इन क्लासेस के लिए कोई पर्टिकुलर चार्ज रख देते हैं, अगर आप पर्टिकुलर चार्ज हमें पे करेंगे तो ही हम इस कंटेंट को अवेलेबल कराएंगे, तो वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड कर रखा है। जब भी हम कॉस्ट फैक्टर इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज आपको पे करना होंगे। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक वीडियो चल रही है, अगर मैं इसको एक कॉस्ट फैक्टर में डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं कंटेंट में डाल देता हूँ कि इस कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होंगे। जब भी आप 100 रुपये पे करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट मिल जाएगा। जैसे हम अनअकैडमी की बात करते हैं, अनअकैडमी में क्या होता है, वहाँ पे भी प्लस कोर्सेज होते हैं, मैनी मोर थिंग्स होती हैं। कुछ क्लासेस होती है जो फ्री होती है, कुछ क्लासेस होती है जिसमें आपको पैसे देना होते हैं और बिना पैसे के आप वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो वही चीज़ होती है, वो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। कॉस्ट फैक्टर जहाँ जहाँ इंक्लूड होगा वहाँ वहाँ आपको क्या करना पड़ेंगे, चार्ज देना होगा, वहाँ वहाँ आपको क्या होगा, पैसे देना पड़ेंगे। मतलब कॉस्ट फैक्टर का यूज़ सिर्फ किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ मनी होती है। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट फैक्टर वी कैन कलेक्ट मनी फ्रॉम द यूजर इफ दे आर यूजिंग अवर सर्विस। इज दैट क्लियर? दैट आर नोन एज कॉस्ट फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द केस व्हेन यूजर टेक्स सम फैसिलिटी फ्रॉम एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन किसी भी टाइप की फैसिलिटी लेता है, एंड द कंपनी यूजर पे सम मनी, दैट money are known as cost factor. Now whenever any user are taking a facility from a company and from any person, and in respect of that facility, that person are paying any charge, paying any cost, so that are known as cost factor. Is that clear? Now it is a simple term, यहाँ पे एक simple term का यूज़ किया गया है। अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, मैं हूँ या फिर कोई भी पर्सन है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर कोई भी सर्विस लेता है किसी भी कंपनी से या फिर किसी भी पर्सन से, तो उस सर्विस के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या करते हैं, चार्ज पे करते हैं। या फिर हम किसी भी पर्सन से कोई काम करा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में उसने बोला कि मुझे ये काम करने के इतने पैसे चाहिए, 100 रुपये मुझे इस काम करने के लिए चाहिए, तो क्या होगा, आपने उससे वो काम कराया और आपने उसको क्या कर दिए, 100 रुपये दे दी। इट मीन इट इन्वॉल्विंग अ कॉस्ट फैक्टर। आपने कोई सर्विस ली और उस सर्विस के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे क्या करा, मनी उसको दे दी। तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, कॉस्ट फैक्टर। दैट मनी are known as cost factor which you are distributing and which you are giving to the company and to the particular person. Okay, आप पर्सन से सर्विस ले रहे हैं या फिर किसी कंपनी से सर्विस ले रहे हैं, तो कंपनी को जो आप पैसा पे कर रहे हैं या फिर उस यूज़र को जो पैसा पे कर रहे हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी क्या कहलाता है, कॉस्ट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड डेफिनेशन इज देयर, फॉर टू अरेंज एंड स्टेबलाइज्ड अ नेटवर्क एंड the spending money are also known as cost factor. Now this is a simple definition. One more definition is there. Now second point is representing, for to arrange and stabilize a network and the spending money are also known as cost factor. जब भी हम कोई भी कुछ चीज़ अरेंज करते हैं, अरेंज करना इट मीन कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, तो उस परचेजिंग के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होता है, मनी देना होती, तो वो मनी भी क्या कहलाता है, कॉस्ट फैक्टर ही कहलाता है। जब भी हम कोई सर्विस ले रहे हैं, कोई परचेजिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमें क्या देना होती है, मनी देना होती, तो वही कहलाता है क्या, कॉस्ट फैक्टर। इज इट क्लियर?
Now next we are just going to talk about communication medium. This is the last need of communication. Now in communication medium there is a multiple devices are there, and when with the help of that medium we can communicate with our internet and communicate with our other person, with our family member, with our friends, so we can communicate with other pupils. Now communication medium, it mean, now I'm just showing a medium it mean we can say a source it mean which help to transfer information, that are known as medium and source. Now when I'm talking about that communication, so I want to explain the term of this communication. Now communication, it mean what? Now this is a device and this is another device. When I am transfer information from this device to this device, okay, so it is a simply, we can say, transformation of information, transforming of information. It is not a communication, okay, we are just distributing the information. This device transfer information and this device receive the information, so it is a distribution of information, it is not a communication. When we are again transferring information from this device to this device, so this is a device which transfer information, and this is a device which is receiving information. Just like when I am giving a name of that particular device, A and B. Is it clear? These are two devices are there. So that two device, I am just giving a name of that particular devices. Okay, A and B device, there is a two devices are there. If they are transferring information, A device is transfer information to B device and B device is transfer information to A device. Okay, now when that activity are performing at the same time, whenever this A device is transfer information and at the same time if that B device is transfer information to the A device, so that are known as communication. Okay, now if we are just transferring information from one device to another device, so it is not a communication, because it is transfer information from one place to another place. But at the same time that B device are also distributing information, it always transfer information, and this device are also receiving at the same time, so we can say it is a communication. Is that clear? Communication term is clear, that because communication is whenever we are transferring information from one device to another device, and another device also transferring its information to that particular device, so that are known as communication, Is it clear? Now whenever we talk about that communication medium, so there is a communication medium, it means we are using a device for communicating. Now there is a multiple devices are there. First is computer, second is laptop, third is mobile phone, smartphone we can say, and it is a telephone. So that are the medium. With the help of that medium we can transfer our information, we can communicate between two or more pupils and stabilize the communication between multiple people. If you want to connect with our friend, if you want to connect with our family members, so we can directly connecting by using that particular devices. Is that clear? Now next is first point is there, device which help us help use to connect with other user, that device are known as communication medium. Is that clear to everyone? Now there is an device which helping us to communicating with other person, so that device are known as communication medium. Now we have to just complete that all the topics of today class. Now after that we are having two different types in which we are showing advantages and disadvantages, so we will discuss that advantages and disadvantages in next class. Okay, so you have to just complete that points and learn about that. You make all the notes according to our classes. So there is one more thing is there, advantages and disadvantages are there, so we will discuss that advantages and disadvantages in next class. Okay, so you have to just prepare for that, and you make your proper notes and completing that all the classes, and making your proper notes which examples and many more things are using in the class. So you please make your better notes, that notes which you are making, that you are using that your own language. Okay, जब भी आप कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप अपनी प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ कीजिए. यहाँ पे जितने भी स्लाइड शो की जा रही है सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करने में काफ़ी ईजी हो जाए. ओके, सो हैव अ नाइस डे टू एवरीवन. प्लीज़ शेयरिंग दैट आवर क्लासेस, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा कंटेंट हम पर्सनली इसे डिज़ाइन करते हैं. आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाइए, ताकि यहाँ पे ये कंटेंट सभी स्टूडेंट को मिले. जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट नहीं आई है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा. तो आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिए, तो आप अपनी हम हेल्प कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होंगे, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ही अच्छा हम कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे. सो हेलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. प्लीज़ एंजॉय दैट क्लास एंड शेयर विथ अ मोर स्टूडेंट. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप ये शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ सकें. इज दैट क्लियर? So have a nice day to all of you, and just we are finishing our class. Okay,
Thank you all of you.